Hello, we'll start today's lecture. Hello, good afternoon all. Good afternoon, Varsha, Vansh, Riya. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Chalo, what chapter are we doing today? Any idea? Yes? The living world. Yes, the living world. The first chapter of your book. Okay. Priyanka ma'am has already started with digestion, right? So simultaneously, as we told you earlier, two chapters will be going on. Chalo. We'll start with the chapter, the living world. Firstly, what do you mean by living? क्या होता है लिविंग थिंग्स? व्हाट आर लिविंग थिंग्स? कब से पढ़ रहे हैं हम ये लिविंग थिंग्स के बारे में? व्हाट एग्जैक्टली इज लिविंग थिंग? वंश? यस? रिया, एनी आइडिया व्हाट इज लिविंग? ट्राई टू आंसर. वर्षा, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग? Anyone? Yes, Varsha. Sir, I don't remember the exact definition. Whatever you know. Anything that can move, Anything that can move, okay, that is living. that is motile. maybe. Okay. Anything else? Any other property? Living organisms are the organisms that grow. Okay, Over the time. organisms that grow, very good. Organisms that grow over time, they are living, yes. Anything else? They can reproduce. They can reproduce, very good, that's a good point. And reproduction बोल दिया, growth बोल दिया, locomotion बोल दिया. Anything else? How will you define any property which is common for all living organisms and which is not there in any non-living things? By the way, living thing and non-living thing is the first thing that you learn in science. याद करो वो बचपन के दिन when you had class 1 में EVS as your subject. You did not have history, geography, you did not have science, you did not have any other subject. You had maths, GK, EVS, and languages. The first chapter was living thing and non-living thing, right? The first time we heard the term environment and we were like, अरे बाप रे कितना difficult spelling है. ENVIRO, N और M साथ में आ रहा है, ऐसा कैसा spelling है? That was the chapter where we learned the first thing of science, that was living thing and non-living thing. And the same points you are telling me, right? Growth, reproduction, then locomotion, any other point? सोचो. That's it. ये तीन चीज होगी तो कोई भी thing living होगा. Yes, Vansh. All of them have a distinct metabolism. Metabolism. Okay. Now tell me what is metabolism, Vansh. This ये अर्थ भी थक गया बाउंस कर करके. What is metabolism? Any idea? Okay, chalo. We'll learn all these points, whatever we have mentioned here. I just wanted a opening where, you know, where I wanted you guys to say me certain points, and I'll tell you why whatever points you told, be it growth, be it reproduction, be it locomotion, it is not the defining property of living things. So anything which moves or anything which grows is not living thing. That is what I will prove you today. So let's start with the chapter. These are the different types of living organism. This is porcupine. Okay, you have owl here, porcupine here, you have panda, a bee, frog, fox, and again wolf. So all this, see, what I have given here is, this is a mountain, right? Anything in this image, can you see, is it living?
क्या ये लिविंग है? Yes, Varsha, you are right. Metabolism is catabolism and anabolism. Completely right. Yes, in this image, anything that is living. Just a second. Yeah, is this living? The mountain and the clouds, are they living? Movement तो हो रहा है. Clouds are moving, right? But can I call it living? No. Why? Living, move करना तो property था. See, what all properties you gave me, na, they are not exclusive property. When I say the term defining property, which means that property should be there in every non-living things, and that property should not be there in non-living things. So I need a common defining property जो सारे के सारे living things में हो, और वो non-living things में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, but सारे living things में होना चाहिए. If I say movement, if I say locomotion, for example, say plants don't move, and then we have some animals like porifera, even they don't move, right? So all those animals are still living. Here, okay, whatever you want to tell me now, please keep your microphone on, because when I take the chats, when I read the chats, the PPT goes off. I don't know why. Yeah, respiration. Yes, Riya, respiration to completely right. Respiration. What is respiration? Respiration is breathing in and breathing out, right? क्या है respiration? Riya. Respiration is breathing in and breathing out plus breakdown of Glucose. Yeah. Thank you so much. Respiration is not just breathing in and breathing out, it is also the breakdown of glucose, right? सांस लेना, सांस छोड़ना is breathing, and there is a difference between breathing and respiration. In respiration, you break down complex things into simpler ones. So yes, respiration is also a property of living things. This is living. Here you can see plants, but plants are not moving, right? They are depending on the physical activity. They are just changing their position. Okay, that is not locomotion. वो हवा की वजह से move हो रहे हैं. But do plants actually move? Do they move? Do they respond to light? Yes, they respond to light, right? They also respond to water, which means plants में movement होता है. So I can say movement is a property of movement is a property of living things. But movement defining property है क्या? वो हम नहीं बोल सकते. Here you can see bird and water both are moving. Water is not living, but the bird is definitely living. Here this animal is also living. Okay. You have fishes. You have corals. Even this, where the fishes are living, they are also not moving, but they are still animals. They are called as coral. This you will learn in chapter 4 Animal Kingdom. Coelenterata, Porifera, वो सब में आएंगे ये लोग. Then you have elephants, which are also moving, quite living as well. We'll learn about the characteristics of living things: growth, reproduction, metabolism, consciousness, okay, and a few properties more. But what are the defining properties? As I told you, what is living? We have other characters like self-replicate, self-organization, interaction, and emerging. Let's learn about each word. Self-replicating is nothing but, you can say, it is a part of reproduction. अपने आप जैसा कुछ बनाना, that is called self-replication, right? Self-organizing, you make your own cells, okay? Those cells combine to form tissues. Okay, those tissues interact with each other to give you organ systems.
and that is how as an organism you emerge. So these are the other characters which are related to living things, but majorly these are not the characters that we learn. Okay, ये characters हम कभी नहीं पढ़ते because they all are part of some complex structures or some complex processes. All living organisms grow. Okay, growth can be increase in cell mass or can be increase in number. See, right now, okay, whatever we were when we were born, तब से लेके अब तक our mass has increased, also the cell number is also increased. Yes or no? I'll give you a plain example. Watermelon देखा है तुमने सबने, right? Watermelon when it fruits it is this big. Initially वो सिर्फ इतना सा होता है, and in watermelon there is no increase in cell number. The cell mass increases. मतलब if this size of watermelon has around say 40 million cells, so this 40 million cells will grow up to 3.5 lakh times bigger. तब जाके वो watermelon इतना बड़ा बनता है. Are you getting my point? So either increase in cell mass or increase in cell number. या तो number बढ़ेगा या तो weight बढ़ेगा. Okay. हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म में इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. जैसे जाइगोट इज 1 सेल, 1 से 2 होना, 2 से 4 होना, 4 से 8 होना, 8 से 16 होना, 16 to 32. Till 32 cell stage only the number is increasing. After 32 cell stage number is also increasing and size is also increasing, right? So depending upon organism to organism, either growth can be increased in cell mass or it can be increased in cell number. You know maize पता है आपको? maize, what is maize? कौन सा प्लांट है? Yes, वर्षा, maize क्या होता है? So corn, right? Yes, corn. maize कौन है? maize corn ही है. maize is nothing but corn. maize में the apical part, that is the topmost part of root or topmost part of shoot, okay, that grows up to 45,000 cells in 1 hour. Imagine करो 45,000 cells per hour, उतना उसका number बढ़ता है. So in some examples like watermelon, the cell mass increases, whereas in some example the number increases. Clear? Let's see more properties. You have animal growth, you have limited time period where the animal does not grow throughout the life. In animals, also in humans, the growth is very limited, right? We don't keep on just growing and growing. Plants में the growth is unlimited. Okay, they have no limits. Plants को जब तक आप nutrients दोगे, water दोगे, sunlight दोगे, the plant will keep on growing. Animals में the growth is internal and animals do not grow throughout their life. एक certain stage of life के बाद the height, the mass, it is more or less stable, right? Cell division occurs in certain tissues to replace lost cell. Like cell division, imagine if you just pinch yourself right now, okay? If you pinch it hard enough, इतना hard कि pain हो रहा है, and then you leave it, which means यहाँ पर जो redness आएगा, that is the loss of cells. Your cells are either damaged or either they are dead. But वो as it is नहीं रहेंगे, वो throughout after a certain point of time वो replenish हो जाएंगे, वो replace हो जाएंगे, which means cell division is a property of living things and that is also part of growth only. So similarly humans में या कोई भी बड़े animal में cells मर भी रहे हैं, at the same time new cells are replacing themselves. So पुराना cell मर रहा है, नया cell born हो रहा है. Clear? Then unicellular organisms grow by cell division. Unicellular organism यानी amoeba, okay, paramecium, you have yeast, they all grow by cell division. One can simply observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under microscope.
What do you mean by in vitro culture? Any idea what is in vitro? What is in vitro? Have you heard of this term in vitro? The term in vitro means in glass or artificially. Basically, in a test tube, that is in vitro. In nature, it is called in vivo. So you have in vitro, that is in glass or in tube. So if I grow maybe a bacteria in a test tube or on a plate, I can simply see the number of cells growing and I can calculate how much is the growth or how much is the increase in number. Okay, what is reproduction? Can you define reproduction? Kriya? Fusion of male gamete and female gamete. That is sexual reproduction. In general, reproduction क्या होगा? Reproduction is producing something which is similar to their own kind, right? तो अगर एक सेल है वो डिवाइड होके दूसरा सेल बनता है, लाइक अमीबा, इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो ये ग्रोथ हुआ बिकॉज सेल नंबर बढ़ा. बट इसी को मैं रिप्रोडक्शन भी बोल सकता हूँ बिकॉज न्यू सेल्स इज फॉर्म्ड, राइट? एंड द न्यू सेल इज एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वन. So for unicellular organism, growth and reproduction are the same thing. Okay, is this clear? You have a statement in your book that we will read. For multicellular organism, growth and reproduction are mutually exclusive event. Mutually exclusive event का मतलब होता है they are not at all similar. वो दोनों अलग अलग चीजें हैं. Growth अलग होगा, reproduction अलग होगा. But when I consider a unicellular organism, for that organism, growth and reproduction will be the same. Because growth can be defined as increase in cell number. तो 1 से 2 बना तो सेल नंबर बढ़ा, बट 1 से 2 बना दैट इज नया ऑर्गेनिज्म आया, दैट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इज दिस क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. See, this is how I will see in a microscope, and exactly I will see blur and then I'll have to fine adjust it to see it properly. Unicellular organism 1 ka 2. So if I go from here, this is say point A, this is point B. So A to B number बढ़ा तो growth भी हुआ, और A to B दो नए सेल आए, which means it is a type of reproduction. Cell division, reproduction, growth. Okay, all the three are same for a unicellular organism, but that is not the same for multicellular organism. So this is for unicellular organism, all the three things are same. In majority of higher plants and animals, growth and reproduction are mutually exclusive events, as I told you. Mutually exclusive event हमको set में आता है. You have a chapter in maths that is called sets. उसमें होता है set A, set B, mutually exclusive event, यानी दोनों में कुछ भी similarity नहीं होगा. See, A, B and universal set. Growth is increase in mass or volume. अगर growth को मैं defining property समझूं तो माउंटेन्स में भी ग्रोथ होता है, एंड माउंटेन इज अ नॉन लिविंग थिंग. तो आइडियली कोई भी नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ नहीं होना चाहिए. माउंटेन्स में भी तो नेचुरली ग्रोथ होता ही है ना, राइट? द सेकेंड स्लाइड विच वी सॉ, माउंटेन्स के ऊपर आइस भी गिरेगा, ठीक है, लेयर ऑफ सॉइल भी आएगा, डिपोजिशन होगा, दैट इज अ नेचुरल इंक्रीज. आइडियली मास बढ़ रहा है तो क्या वो उसको ग्रोथ बोलेंगे हम? कैन आई से दैट माउंटेन इज ग्रोइंग, or can I say the mountain is living? What will be ideal? Mountain is growing or mountain is living? Growing. Growing, right? But is mountain living? Mountain तो non living है ना, which means
our assumption that growth is a defining property is incorrect. यानी जो हम ग्रोथ पढ़ते आ रहे हैं, ग्रोथ लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. माउंटेन्स का एग्जांपल, एवरी सीजन इट चेंजेस. ओके, thus growth cannot be considered as a defining property. याद रखो. रिप्रोडक्शन पे आते हैं. रिप्रोडक्शन क्या है? What is reproduction? Let's break the word. Re means doing it once again. Production, बनाना. फिर से जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको बनाना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ऑब्वियसली सेक्सुअल एसेक्सुअल होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्ड रिप्रोडक्शन. प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोजेनिस. प्रोजेनिस यानी young ones from the pre-existing organism. I need to produce young ones from organism which are already there. So dogs से dogs का आना, cats से cats का आना, ठीक है, that is all reproduction. You have sexual and asexual, where sexual reproduction is a single parent. Okay, very less variation or no variation at all. एक ही parent का जरूरत है, simpler organism में होगा. एक अमीबा 1/2 हो गया, तो जो 2 अमीबा है वो भी ओरिजिनल अमीबा जैसा ही होगा, राइट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर 2 पेरेंट्स कंबाइन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, वैरायटी मिलेगा और हायर ऑर्गेनिज्म में होगा. ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यू हैव रीजनरेशन. रीजनरेशन अगेन, री इज वंस अगेन जनरेशन, फॉर्मेशन. एग्जांपल प्लेनेरिया. This is planaria. If you cut planaria into 2 parts, the lower part will grow into the upper part and upper part will grow a lower part. तो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे मुझे. ओके, तो ये काटो घोलो लगा लो नहीं है, काटो और वो अपने आप ग्रो करेगा. बट डोंट कंफ्यूज, ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन पे कट करना पड़ेगा. ऐसे तुम ऐसे चॉप 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 करते रहोगे, ऐसे अनियन को कट करते वैसे वैसे, फिर वो ग्रो नहीं करेगा, उसका खीमा बन जाएगा, इट विल डाई. Specific points पे कट करोगे, it requires minimum amount of cells so that it can regrow. Can you think of any other organ in our body which has the property of this regeneration? क्या हमारे बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन है which can regenerate itself? Liver. Liver, yes. Liver can regenerate itself, okay, but it requires 1/3, that is 33% liver होगा, so it can regrow into a full completely functional liver. Clear? Then you have fragmentation. See, fragmentation and regeneration is one and the same thing, but in regeneration it is related to animals. Fragmentation it is related to plants. So you have Spirogyra. Okay, it is a filamentous algae, or it also happens in fungi and mosses. You can see here, if this is the Spirogyra, if you break it into 1, 2, 3 fragments, this will grow into different plant, this will grow into different plant, this will grow into different plant. Same happens with sugarcane as well. Okay, the sugarcane that we eat, that one sugarcane can be cut down into many 5 to 7 different pieces, and every single piece can grow into entire new plant. Easy. Then you have budding. Okay, example, yeast and hydra. Yeast is a fungi, very very important. Yeast algae नहीं है, yeast plant नहीं है, yeast is a fungi, वो एक टाइप का फंगस है. This is yeast. See, this is bud, this is a bud, then this is also a bud, this is a bud. ये सारे buds गिर के they can live their independent existence. It is basically, imagine करो, if this is a yeast, यहाँ से bud होगा, this bud will keep on growing, इतना सा बड़ा हो जाएगा, then it can detach itself. Okay, like hydra. Hydra is also budding. Hydra is the animal. Okay, let's say types of asexual reproduction. Spore formation, fungi again, sporangium, sporangiophore. So यहाँ पर bread के ऊपर grow कर रहा है, it takes up the nutrients and then it forms a sporangiophore. ये sporangiophore पे sporangium आएगा. Sporangium is the part where there will be spore formation. It will burst out and the spores will keep on flowing into the air.
जहां जहां ये स्पोर गिरेगा वहां पर अगर कंडीशन मिल गया तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू फंगाई. क्लियर? इजी? एनी डाउट स्टिल हियर? ओके. बट कैन रिप्रोडक्शन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर? रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा क्या? डू ऑल ऑर्गेनिजम्स, डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? सोचो कोई है ऐसा जो रिप्रोड्यूस ना करता हो? एनी ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग? थिंक ऑफ इट. सर आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट वो देखो ना माउंटेन्स पे जाता है वो डोंकी का कुछ तो शायद मेरे को याद ही नहीं आ रहा. हाँ हाँ, म्यूल म्यूल म्यूल, हाँ डोंकी म्यूल. और घोड़े का ब्रीड. ओके. म्यूल cannot reproduce, it is sterile. Any other example? You know male honeybees? There are certain honeybees who will not reproduce. Okay, only the queen bee reproduces. बाकी सारी फीमेल बीज रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे. मेल सिर्फ स्पर्म देके मर जाएंगे. सो इवन वर्कर बीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो क्या वो लिविंग नहीं है क्या? दे आर लिविंग, राइट? यस और नो? Yes. Which means, can I say reproduction is a defining property? Let's see. There are many organisms which may not reproduce. Example, mules, sterile worker bees, and infertile human couples. Also, there are many couples who are not able to reproduce. Okay, who are not able to produce young ones. तो वो भी क्या living thing नहीं है क्या? Worker bees, they don't reproduce at all. Mules जैसे कहा, mules is a cross of donkey and horse. Okay. अगेन लेट मी टेल यू, ये नेचुरल नहीं है. ओके, ये हम लोगों ने करवाया है. हमने डोंकी और फीमेल हॉर्स को मेट करवाया है. ओके, मेटिंग भी ऐसे प्रॉपर मेटिंग नहीं है. हम डोंकी का स्पर्म लेते हैं और फीमेल हॉर्स में इंजेक्ट करते हैं. क्लियर? कोई घोड़ा जाके ऐसे, सॉरी, कोई गधा जाके ऐसे घोड़ियों को लाइन नहीं मारता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, म्यूल्स में the male is donkey and the female is horse. ओके, इस चीज को याद रखने के लिए हमेशा याद रखो, मेल्स गधे होते हैं. ओके, एंड फीमेल्स आर हॉर्सेस. अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना, क्यों ऐसा उल्टा करेंगे? तो अगर मेल घोड़ा ले लिया और फीमेल हॉर्स ले लिया तो क्या होगा? तो भी म्यूल आया था, बट वो म्यूल ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहता. सो इट इज नॉट यूज्ड. एंड व्हाई आर म्यूल्स फॉर्म्ड? सी, on hilly areas I require some animal, who has a greater legs and a huge load carrying capacity. Horses के पास पैर अच्छे हैं, they can very well climb on tall mountains, rocky areas, but they cannot carry the load. And donkeys are very good transporters, वो बहुत ज़्यादा load carry करते हैं, but they are not good with traveling on mountains. So हमने क्या किया, चलो दोनों का प्रॉपर्टी को मिक्स करके देखते क्या आता है. हमें जो आया उसको हम कहते हैं म्यूल. ये म्यूल के कॉमन नेम्स भी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज खच्चर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टट्टू. ओके, व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस? बिकॉज देयर आर सर्टन पेपर्स जहां पर वो हिंदी नेम्स लिखते हैं. ओके, खच्चर इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश. तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेल कौन था और फीमेल कौन था. क्लियर? इजी? कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. वर्कर बीज का भी जिंदगी बहुत ही कठिन होता है. दे डोंट रिप्रोड्यूस एट ऑल. ओनली द क्वीन बी हैज द राइट टू रिप्रोड्यूस. ओके, क्वीन बी क्या करती है? कलेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम ऑल द मेल्स एंड देन इट लेज एग्स. ऑन सम एग्स इट विल ले द स्पर्म एंड ऑन सम एग्स इट वोंट ले द स्पर्म. ओके, जहां पर स्पर्म आया है वो सारे वर्कर बीज बनेंगे, जहां पर स्पर्म नहीं गया है वो सारे ड्रोन बनेंगे, यानी मेल बीज बनेंगे. तो वर्कर बीज, आई मीन हनी बीज में थोड़ा सा सिस्टम अलग है, इनका थोड़ा कल्चर अलग है. ओके, पूरे कॉलोनी में शायद एक ही क्वीन होगी जो रिप्रोड्यूस करेगी, बाकी मेल्स भी सिर्फ स्पर्म देंगे. ओके, एंड द वर्कर्स भी डू नॉट मेट एट ऑल. सो क्वाइट सैड देयर लाइफ इज.
Hence, because I have these exceptions, I cannot call reproduction as the defining characteristic of living organism. तो जो दो मेन कैरेक्टर्स थे वो तो उड़ गए मेरे, ठीक है. क्या क्या उड़ गया? ग्रोथ उड़ गया, रिप्रोडक्शन उड़ गया. लेट्स सी और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है विच माइट बी defining property. So I think last lecture you liked the game thing, so even I have done that. I hope Priyanka ma'am does not mind using this. चलो start करें. Yes, sir. चलो बताओ. हाइड्रा शोज, ऐसा इमेजिन अ बैकग्राउंड म्यूजिक, टन 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 टन. हाइड्रा शोज रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, नन ऑफ द अबव. चैट पे मत लिखो प्लीज, मैं चैट खोलेगा तो उड़ जाएगा फिर वापस पूरा. budding, बडिंग, ओके. वंश, वर्षा. Budding. Budding, budding, budding. It is the right answer. Yes. Okay, okay. Next question. Spirogyra shows reproduction by dash. You can raise your hand also, okay. P, B or D or A. P, C, spore formation. Okay. Varsha, Vansh. C. C, Varsha. A. maybe. Answer is A, fragmentation. Spore formation was for algae, fungus, not algae. Spirogyra. ये रहा Spirogyra. कहाँ गया? Fragmentation. Spirogyra, filamentous algae. है ना? This is Spirogyra. Planaria shows dash. This is much more easier. Degeneration. Degeneration, okay. Vansh. Priya, regeneration, degeneration. Vansh. Regeneration. Answer is regeneration. Okay. This is slightly trickier. Try this. Statement 1, growth is not a defining character of living thing. Statement 2, mountains and sand molds also grow. Tell me which statement is correct. Option A says that only statement 1 is correct. Option B says that statement 2 is correct. Option C states both option 1 and 2 are correct. And 2 is the answer for A. And option D is none of the above. Option C. Option C, okay. C. C. Riya? Okay, answer is C. By the way, these type of question are called reason assertion type of question. इसको solve करने का एक बहुत ही simple तरीका है. Firstly, you identify whether the statements are correct or not. Here I can see both the statements are correct. Now to find out whether the statement 2 is a reason for statement 1, what you can do is you have to read the first statement, add because here and then read the second statement. Then पूरा साथ में read करके देखो, does it make sense? Let's try this. Growth is not a defining character of living things because mountains and sand molds also grow. तो ये एक possible statement लग रहा है, logical statement लग रहा है, मतलब statement 2 is the reason for statement 1. Is this clear? Whenever you get Yes. these kind of question, the first thing you will do is check whether the two statements are right or wrong. If they are right, पहले के आगे because लगाओ, फिर पूरा statement read करो,
Then C, does it make sense? If it is making sense, then statement 2 is the reason for statement 1. Cool? Easy? Chalo, next question. Okay, before starting with metabolism, textbook देख लेते हैं, textbook में क्या क्या है. We'll just go through the textbook once. Chalo. How wonderful the living world is. The wide range of living types of type is amazing. Extraordinary habitats in which will live, which you find living organism. जैसे mountains दिखाया था initially, grasslands दिखाया था, ये सब ocean दिखाया था. हर जगह पे you will find organisms. Okay, everywhere you will find living organism or the living world. Be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs. What do you mean by hot springs? Thermophile. Thermophilic organisms. Okay. Hot springs are basically जो गर्म पानी के कुंड होते हैं. There are this hot water wells which are present in many areas across Maharashtra and all over the world, where you find the geothermal energy. मतलब जो जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर का जो हीट है, that boils the water above it. और वो वाटर भी, बॉइलिंग वाटर में भी you will also find archaea bacteria or a special type of bacteria, and that is mind boggling because usually ये बॉइलिंग वाटर में कोई ऑर्गेनिज्म रहता नहीं है, बट वहां पर भी बैक्टीरिया रहता है. They leave us speechless. The beauty of galloping horse यानी running horse, of migrating birds, the value of flowers or attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. All these things makes us wonder whether how these things are going to be. Okay, I think so this session is going to end, so we'll continue from here in the next session. Okay, please join with the same link. Yes, we'll continue. Okay, so this entire line, beauty of galloping horse, migrating birds, ये पूरा लाइन ऐसा लगता है कि it is from a movie. ऐसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख रहे हैं, वो गाना चल रहा है और बाहर घोड़े भाग रहे हैं, वो अमल्फी कोस्ट पे वो लोग ड्राइव कर रहे हैं. ओके, सो दिस मेक्स अस वंडर हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज. The ecological conflict and the cooperation among members of a population and among populations of a community, or even at molecular traffic inside the cell, makes us deeply reflect on what indeed is life. ठीक है, ये थोड़ा philosophical question हो गया कि आसपास जितने conflicts हो रहे हैं between a population, मतलब ह्यूमन में या डॉग में जो हो रहा है, या डॉग्स और दूसरे कम्युनिटीज में हो रहा है, या ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या हमारे सेल के अंदर जो चीजें हो रही है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक यानी inside our cell there are so many molecules going from this part to the other part, that we'll learn in further chapters what exactly is molecular traffic and how molecules move from one part to the other cycle that reflects what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is and opposed to the non-living, and the second one is a philosophical one. तो हम लोग सेकंड वाले पे अभी नहीं जाएंगे, ये हमारी उम्र नहीं है philosophical question वाली. So हम थोड़ा technical question पे जाएंगे कि what exactly is living and what is non-living, right? As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. ठीक है, तो हम at this age and this time we will reflect on the first question more. So what is living? When we try to define living, we conventionally look at the distinctive characteristics exhibited by living things: growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as we feature the unique features of living organisms. See, growth, reproduction हमने discuss किया. Ability to sense environment. This ability to sense environment was called as responsiveness to stimuli. Okay, इमेजिन करो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में आता था रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई. वो मिमोसा प्लांट को टच करते थे तो वो बंद हो जाता था, राइट? ऑल दोज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दीज ऑल प्रॉपर्टीज वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग.
Okay, so what is different right now is we'll look it from a different angle. इसलिए मैंने कहा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढेंगे जो सारे के सारे लिविंग थिंग्स में होना चाहिए और वो प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होना चाहिए. ओके, दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. टिल नाउ हमने दो प्रॉपर्टीज देखी है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एंड दोनों में से कोई भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. लेट्स सी व्हाट वी कैन, how we can move from now on. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact and emerge to the list. ये भी हमने देखा क्या क्या टर्म्स यूज किए जा सकते हैं इसमें. ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में हम छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हैं. Let us try to understand each of this. All living organisms grow. Obviously, every living organism grows. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Very, very important. One more MCQ from here. Dash and dash are twin characteristics of growth. Increase in mass and increase in number. Okay. Increase in mass बोलो या increase in volume बोलो, दोनों चलेगा. Okay, but increase in number के साथ साथ either mass होना चाहिए या volume होना चाहिए. That will be your appropriate answer. If option has increase in mass and number, increase in mass, volume and number, I will still select mass and number because book में mass दिया है. Okay, जो book में दिया है वो हमारा final answer होगा. Is this clear? A multicellular organism grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously through their life. प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ होगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, बट इन एनिमल्स द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज. हम एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करेंगे. राइट नाउ मेरा हाइट अब इससे और शायद ना बढ़े. ओके, मे बी इन एज, इन द एज यू आर, आपका हाइट थोड़ा सा बढ़ सकता है. ओके, वेट ऑब्वियसली बढ़ घट सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट एंड इंटरनल ग्रोथ ऑफ बोन्स. तो दैट वोंट इंक्रीज फ्रॉम नाउ ऑन. So at particular age, the height stops or the growth stops. However, cell division occurs in certain tissues and that is replaced by lost cells. As I told you, if you pinch it, some cells are dead. Again, those cells will be replaced very soon. Unicellular organism grow by cell division. Unicellular organism, they grow by cell division. One can observe in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscopes. I can simply count the number of cells which are there in the microscope and I can say whether the organism is what the number of organism is. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. Very, very important. Last 2 or 3 years में एक या दो स्टेट CET में ये क्वेश्चन पूछा है. तो जैसे नीट होता है वैसे हर एक स्टेट का भी CET होता है, कॉमन सेंटेंस टेस्ट. तो उसमें ये स्टेटमेंट पूछा है, important है. If you have a physical book, please mark it. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. Technically देखा जाए तो अगर ये बुक है, ओके, बुक को ऐसे मैंने रख दिया, नेचुरली इसके ऊपर कुछ डिपॉजिट कर गया तो इसका ग्रोथ हो गया. इंक्रीज इन बॉडी मास हुआ तो इट इज ग्रोथ. ओके, बट ऐसे तो हो नहीं सकता. Mountains, boulders, sand molds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. In living organism, the growth is from inside. Living organism का जो growth होगा, that will be from inside the body. Growth, therefore, cannot be taken as a defining property of living organism. Important. Growth is not a defining property. Condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. तो dead organism grow नहीं करेगा और living thing का एक property है growth, but growth defining property नहीं है. There is a difference between the two terms. All living things grow, but growth is not the defining property. Is this clear? Cool. Yes, can we move forward? So, Reproduction, likewise, is a characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. जब मैं reproduction का बात करता हूँ, the first thing we
invariably think of a sexual reproduction, right? The reason maybe जब भी मैंने reproduction पूछा, the first thing definition comes is हाँ, the fusion of male and female gamete, but that is not the only form of reproduction that we know. Okay, obviously reproduction बोला तो it is meant कि sexual reproduction होगा, but reproduction में asexual वाला भी part आता है, where other organism reproduce by asexual means like fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce. Spores asexual, which means this spores will not form gametes. ये spore जहां गिरेगा वहां से ही उसका नया life start हो जाएगा. Clear? Okay, how do you pronounce it? ये fungi बोलते हो या fungi बोलते हो? How do you pronounce it? Vansh, Priya? Is it fungi or fungi? Varsha, how do you pronounce? Fungi. Fungi? Okay. Ria, fungi या fungi? Fungi sounds better. Fungi sounds better. Vansh, fungi or fungi? Some say both are all right. Actually, both are all right. It depends upon whatever you say, whichever part of the world you are. Okay. Fungi बोलो, fungi बोलो, ठीक है. दूसरा कोई भी बोले या तुम कुछ भी बोलो, ऑफेंड नहीं होने का, ठीक है. फंगस ऑफेंड नहीं होता तो हम कौन है ऑफेंड होने वाले. In lower organism like yeast and hydra, we observe budding. Budding is growth of bud, और फिर वो bud बड़ा होगा, bird detach itself, and that bird will form a new life of its own. In planaria, flatworms. Planaria is flatworm. ये आता है phylum Platyhelminth में. Okay. Platyhelminth, which means flatworms. There is true regeneration. See, true regeneration मतलब पूरा का पूरा body grow करेगा. Regeneration is also present in lizards and reptiles, but उनमें there are some parts which can regrow. For example, if I say a limb of frog or I say a tail of lizard, if that has been cut off, it grows again. Okay, that is called regeneration. But when I say true regeneration, the entire body can grow. Lizard में जो regeneration होता है, जहां से टेल गया है बॉडी में से नया टेल आएगा, बट टेल में से नया बॉडी आएगा क्या? Yes. That is not true regeneration. Regeneration means only that part which is lost will grow again. Clear? But planaria mein we have seen that every part grows into its own body. That is, a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. The fungi, the filamentous fungi and protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. So fungi, filamentous algae, that is Spirogyra, protonema of moss, they all multiply by fragmentation. ये protonema of moss क्या है? That you will learn in chapter 3, that is kingdom Plantae. Okay, it is a type of plant. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba reproduce is synonymous with growth. देखो यहाँ पर वो लिखा हुआ है, अगर यूनिसेलुलर algae है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम होगा, इट विल बी सिनोनिमस, दैट इज इंक्रीज इन नंबर. ग्रोथ में भी देयर इज इंक्रीज इन नंबर एंड रिप्रोडक्शन में भी यहाँ पर 1 का 2 हो रहा है, which means I can say growth and reproduction are same for unicellular organism. Yes or no? We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organism, we are not very clear about the usage of two terms, that is growth and reproduction. तो unicellular organism में growth और reproduction ऐसे कुछ separating line नहीं है. Growth is also the same thing. Reproduction is also the same thing. Further, there are many organisms which do not reproduce. Example: mules, sterile worker bees, and infertile human couples. They do not reproduce. That does not mean they are not living, right? They are still living. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining property of living things या living organism. इसलिए reproduction भी defining property नहीं है.
It is not a defining property. Okay. Now we'll see about metabolism, what exactly metabolism is. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. See, in the first property, that was growth, we had mountains and sand dunes that were forming. So non-living thing grow कर रहा था. Okay, टेक्निकल ग्रोथ नहीं था मगर इंक्रीज इन मास तो था, इसलिए हमने ग्रोथ को हटा दिया. रिप्रोडक्शन को हम क्यों हटा रहे हैं? बिकॉज नॉट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इसलिए रिप्रोडक्शन को हमने स्ट्राइक आउट किया. It is very important to know the reason why we are not saying reproduction as a defining property or why we are not saying growth as a defining property. Clear? यहाँ तक cool सब? Any Yes, doubts sir. still here? Welcome Soumya. Any doubts still here? Whatever you have heard, Soumya? No, sir. Okay, now let's move back to the PPT. Okay. This is how we'll go. We'll see some things in PPT, then we'll come back to the text. The reason I'm reading line by line is because I want you guys to read with me at least once, and then when we'll tell you to prepare notes, आपका तब एक और बार reading होगा. So minimum every chapter will be done twice before you even give your test, is what our plan is. Okay, and as and when you will give your test or further revision होगा, तब आपका 3 से 4 बार हो जाएगा टेक्स्ट बुक. ओके, ऑल्दो ये चैप्टर आपको बहुत चाइल्डिश लग रहा होगा, अरे इसमें क्या पढ़ने जैसा है. ओके, बट ट्रस्ट मी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 7 years now the same book. Okay, every year I teach multiple batches, multiple students, and right now also if I still find okay, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है. Okay, this statement can be written this way as well. So trust me, this book is very important. Okay, especially if you're opting for entrance exams. Chalo, we'll start with metabolism then. Yeah, metabolism, as Varsha said, it is catabolism and anabolism. Just a second, I will share the screen. Yeah, metabolism is anabolism and catabolism. Anabolism is making things. Example, photosynthesis. Okay, what is photosynthesis? You take CO2 from atmosphere, you take water, you combine the two, and you make glucose, and you give oxygen as a byproduct, right? So synthesis of glucose from CO2 and water is anabolism, where you're making a bigger molecule from smaller molecules, that is making things. And catabolism is breaking things. Okay, what do you mean by breaking things? You are making smaller molecules from a complex molecule. For example, respiration, where glucose is broken down into oxygen, ATP, and heat. Okay, so glucose is a bigger molecule and you have smaller molecules made out of glucose. And the chapter you are currently also studying, that digestion, maybe same thing is happening. You have carbohydrates, they are broken down into simple sugars or glucose, fats into fatty acids, lipids. Okay, so all this process is called catabolism. So metabolism may you have anabolism and catabolism, and both things are taking place simultaneously. All organisms are made up of chemicals, small or big chemicals, and the sum total of all reactions is called metabolism. Be it चीजों को बनाना या चीजों को तोड़ना, everything is metabolism. Biomolecules which are made and changed to the other molecules. So there are biomolecules. Biomolecules also is a chapter. Right now, biomolecules, just understand that biomolecules are organic compounds which are present in the cell. Whatever molecule is present in the cell is called as biomolecules. Okay. And in metabolic reaction, there is conversion reactions where one compound is getting converted to another. See, photosynthesis or respiration, dekho. These two things, I think so you must be knowing. Photosynthesis is CO2 plus water giving you glucose. Respiration is breaking down of glucose to giving CO2, water, and ATP. Okay.
So one molecule is getting converted to another form. Okay, then you have something called as ATP, adenosine triphosphate. Even ATP is broken down into ADP and IP, that is adenosine diphosphate and inorganic phosphate. So metabolism mein there is much more conversion. They are basically ingredients, okay, of a cell, of a recipe. अब ये ingredient तुम हर चीज में डाल सकते हो. It is like a box of spices. Okay, I have all the spices. I can combine them and I can form any other dish. I can combine these two and I can form any other dish. I can take salt and I can put it in every dish. तो एक component हर जगह पर use हो सकता है. They are interchangeable, they are convertible. Sum total of all chemical reactions is called metabolism, and non-living things do not have metabolism. कोई भी non-living thing होगा उनमें कभी भी catabolism, anabolism नहीं होगा. Be it this bottle, this book, this phone, or this laptop, they do not have metabolism. Okay. Yes, I can demonstrate metabolic reactions in a test tube or on a plate, that is in vitro. Okay, but it will be in a cell-free system, but it won't sustain itself. मतलब मैं metabolic reactions plate पे या test tube पे कर सकता हूँ, but वो survive नहीं करेगा. It will require a mechanism or a cell to keep that reaction going. Is this clear? So I can say Yes. metabolism हर living organism में है. Every living organism has metabolism, right? And no non-living things have metabolism. मतलब सारे living organism में metabolism तो है ही, और कोई ऐसा living non-living thing नहीं है जिसमें metabolism हो. Which means I can say metabolism is my first defining feature of a living thing. Is this clear? Is this clear? Metabolism Yes. Yes, sir. is a defining feature of living things, and hence cellular organization of body is the defining feature of life form. Cellular organization क्या होता है? Basically formation of cell. कोई भी living thing होगा उसमें definitely cell होगा या cellular organization होगा. Cellular organization क्या होता है? See, there are biomolecules, उनसे मिलके कुछ complex organic compound मिलेगा, वो सब compound से मिलके एक cell बनेगा, बहुत सारे cells मिलके एक tissue बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. ओके, इफ यू टेक इन अकाउंट ह्यूमन बॉडी, देयर आर ओवरऑल 12 to 13 ऑर्गन सिस्टम्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज हार्मोनल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स है. ओके, एंड ये सारे सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी या ह्यूमन बॉडी बना है. तो देयर इज अ हायरार्की, एक ऐसे लेवल्स है. ओके, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म में अगेन द सेम एग्जांपल व्हिच वी डिड अर्लियर, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, दिस इज व्हाट द मेटाबॉलिक साइकिल लुक्स लाइक. ट्रस्ट मी, दिस पार्ट इज देयर फॉर यू. ऐसा नहीं है बाहर का कुछ है. I will be teaching you this part in further classes. This is there in your 11th class. This is mitochondria. Here you have TCA cycle, Krebs cycle. Okay. And this is the level of organization. Atom से compound या molecule बनेगा, वो molecule से organic organelle बनेगा, उससे cell बनेगा, cell से tissues, tissue से organ, organ से organ system and organ system से organism. So cellular organization is all organisms are made up of cells. Cell is the smallest basic unit which performs all the life processes independently. Very very important, independent existence होना चाहिए. Viruses को हम living नहीं समझते हैं. Viruses are not living because they cannot remain independent. वायरस मेरे बॉडी के अंदर, मेरे सेल के अंदर आके एक्टिवेट होता है. बॉडी के बाहर इट इज नॉट एट ऑल लिविंग, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इसलिए वायरस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, नॉन लिविंग भी नहीं हो, कहीं पर बीच में है, वी डोंट नो वेयर इट इज. नो सच ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ है नहीं. देयर इज नो सेल, देयर इज नो टिश्यू. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया. यस, देयरफॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. तो पहला दो प्रॉपर्टी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज.
Easy? Cool. Any doubts still here? No. Chalo. This is cell, tissue, then organ, organ system, organism, population, community, ecosystem, biome, and biosphere. Okay. In this chapter, we are only doing till organism. Okay. Organism, population. Population is basically same type of organism in an area is called population. Then community, वो organism के अलावा कौन कौन रहता है, ecosystem, the entire living thing and non-living thing component. Okay. But till now, what is important for us is organism. Cell, tissue, organ, organ system, organism. That's it. This is the metabolism going on inside the cell. Okay. Next property is consciousness. What do you mean by consciousness? क्या होता है consciousness? Consciousness is ability to respond, ability to know where you are, what you are doing. That is called consciousness. कभी कभी हम बोलते हैं no, I lost my consciousness. Okay, that means you don't know where you are and what is happening to you. That is called unconsciousness. Consciousness is knowing what is going on and what is in and around you. That is called consciousness basically. It is the ability to sense their surrounding or environment and respond to this environmental stimulus, be it physical, chemical or biological. Okay. ये सिर्फ humans में नहीं होता है, हर एक में होता है. Plants में भी due to physical things, they might go towards the sunlight or they might move away from the sunlight depending upon their light requirements. They can move towards certain chemicals. Okay, like when pollen grains fall on stigma, stigma produces a chemical. And that chemical is responsible for growth of pollen tube. So pollen tube क्यों बना? Because there was some chemical signal. Okay, and obviously there is biological response. Okay, beat, touch, mimosa closing itself. See, all these things, they are easy to imagine for animal, but I'm trying to give you examples of plants. Okay, हर एक organism में ये सारी चीजें होगी. Every bacteria can respond to the physical, chemical and biological environment. The reason bacteria produces antibiotic is to kill the other bacteria. तो वो एक टाइप का biological response है. Okay. Also, consciousness is known as sensitivity, be it seasonal breeding or photoperiodism. Photoperiodism is basically, again, this is a word from the later chapter, but we are discussing it here right now. Photoperiodism is basically the amount of light required by the plant to flower. मतलब मिनिमम 8 घंटे का या 10 घंटे का सपोज लाइट चाहिए एक प्लांट को फ्लावर होने के लिए. दैट टाइम लिमिट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म. इज दिस क्लियर? Then you have seasonal breeding, where a particular animal will breed in a particular season only. Okay, जैसे frogs हो गए, they mate in early monsoon. Okay, cats, dogs, उनका थोड़ा अलग breeding season होगा. Consciousness is found in all organisms, from prokaryotes to the most complex eukaryotes. Right from bacteria to the longest organism, that is whale, सब में ये होगा. All organisms therefore are conscious, that is, they are aware of their surrounding. Human beings, that is Homo sapiens, is the only species aware of itself, that is self-consciousness. Self-consciousness is basically, we are aware of ourselves, we know exactly what is happening to us and what all things are going in and around us and what other organism is doing, because we are the ones who study every organism. हम चीजों को पढ़ते हैं. Okay, we don't find pigeons or sparrows learning about humans, right? They might be learning और शायद हमें ना पता हो. Okay, only humans are self-conscious. Important. Consciousness is the defining property of living organism. तो consciousness आया हमारा तीसरा property जो एक defining property है. Okay, because every consciousness के अलग अलग नाम है. एक है sensitivity, one more name is responsiveness. Okay, responsiveness to stimuli was nothing but consciousness only, but now we are in 11th grade, हमारा स्कूल खत्म हो गया है, तो हम थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज करेंगे, that is consciousness. Clear?
जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा सोचो और ट्राई टू आंसर. A patient is lying in coma in hospital. It has no self-consciousness. It is not non-living as many organs and parts are showing all features of being living. तो अगर कोई पेशेंट है जो कोमा में है तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? टेल मी, इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? Living. क्यों? कॉन्शियसनेस तो है Living. नहीं उसका. देयर इज नो कॉन्शियसनेस, राइट? सो हाउ इज इट लिविंग? हमने कहा कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. उसके पहले हमने कहा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रॉपर्टी होना ही चाहिए. अब ये जो कोमा में पड़ा था उसके पास वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है तो वो नॉन लिविंग हो गया. आंसर, इट इज स्टिल लिविंग बिकॉज ऑल द अदर ऑर्गन्स आर स्टिल वर्किंग. ओके, देयर आर टू थिंग्स. सी, देयर इज अ पर्सन हु इज ब्रेन डेड एंड द पर्सन हु इज इन कोमा. दोनों डिफरेंट है. कोमा वाले पर्सन को वेंटिलेटर का जरूरत नहीं है. The brain is responsible for doing the involuntary activity right now also. Okay, whereas a person who's in coma, उसको वेंटिलेटर का जरूरत नहीं है, मतलब उसका इनवॉलेंट्री फंक्शन चल रहा है. वॉलेंट्री फंक्शन बंद हो गया है. ब्रेन का ब्रेन का वॉलेंट्री कंट्रोल चला गया है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल अभी भी है. इज दिस क्लियर? सो पर्सन बी इट इन कोमा और बी इट in a brain dead condition में I can say it is dead because उसका life support system machines के through चल रहा है. But a person in coma is still said to be alive because consciousness गया है but the involuntary functions are still working. Clear? So this is the brain. Then you have neurons. All the signaling is going on. We know what exactly is happening to us right now. Okay, right now I'm speaking. You are listening through your earphones or through the speaker. That sound is going inside your brain. You are recognizing कि ये word क्या है, इसका मतलब क्या है. You are registering it everything word by word. And after listening to this, you are thinking, अच्छा इतना सब कुछ हो रहा है while I'm speaking and while I'm listening all this, right? All these things come under self-consciousness. And human being is the only one who's aware of himself. That is why it is called self-consciousness. And consciousness is therefore a defining property. Is this clear? Yes, sir. चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो. Did anybody leave or what? Yeah. We'll start with the questions. Yes, here is the question. Which of the following is a defining property of living thing? Metabolism, cellular organization, consciousness, none of the above. बताओ. Consciousness. मेटाबॉलिज्म नहीं है. सर वो लाइफ फॉर्म्स के लिए है ना? हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर्म सेम ही हुआ ना. हाँ. What is the answer? Which of the following is a defining property? Consciousness, metabolism, cellular organization, none of the above. Vansh, Riya, C. C, cellular organization. Okay. Cellular organization. Metabolism नहीं है. Consciousness. Consciousness नहीं है. Cellular organization, metabolism. क्या है आंसर? None of the above. What is the answer? Consciousness. चलो consciousness. बट हमने मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ा है, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. आइडियल आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है जानबूझ के. आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव. ए बी सी तीनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना. तुमको क्या लगा इजी इजी क्वेश्चन आएगा? ओके, दिस इज नॉट योर रेगुलर क्लास कि मैं आपको जानबूझ के इजी इजी क्वेश्चन पूछूंगा. दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन. द ऑप्शन शुड बी आइडियली ऑल ऑफ द अबव. तो आपका डी ऑप्शन आता था. मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी.
all of the properties are defining property. Very very important. यहाँ पर ऑप्शन ई लगा के all of the above करोगे तब आपका ऑप्शन ई राइट आएगा. क्लियर? कूल. Okay, now let's move to the textbook once again and we'll just read through it what all is there in the book. Yeah. Another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside the living organisms, be they unicellular or multicellular. All plants, animals, fungi, microbes exhibit metabolism. Right now also, okay, if you had lunch, digestion चल रहा होगा, हर सेल में respiration चल रहा होगा, you are continuously breathing in, breathing out, oxygen अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, okay, there is transport system going on, blood is flowing through your body, okay, immune system बढ़ रहा है, ठीक है. In general, अगर हम बीमार हो या ना हो, there are always some or the other pathogens constantly attacking us and our body fighting against them. Lots and lots of things are happening. And the sum total of all chemical reactions occurring in our body is called as metabolism. No non-living thing or no non-living object exhibits metabolism. Metabolism सिर्फ और सिर्फ living things में होगा, वो non-living things में नहीं होगा. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in a cell-free system. In vitro हम लोग उसको समझ सकते हैं, but वो reaction sustain नहीं करेगा. It will stop after some time or it will not continue further. Any isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. Very very important. अगर मैं कोई भी reaction करता हूँ outside the cell body, ना तो वो living है ना तो वो non-living है. Okay, तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है. Reaction taking place inside a test tube. A metabolic reaction taking place inside a test tube is dash. Living, non-living, both of these, none of these. Answer is none of this. It is neither living nor non-living. Clear? Easy? Hence, while metabolism is a defining feature of all living things, without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but surely living reactions. तो अगर isolated reactions का बात करें, तो वो living things तो नहीं है, मगर वो living reactions जरूर है. इसलिए मैं कहूँगा cellular organization of the body is a defining feature of life form. Metabolism भी defining feature, cellular organization भी defining feature. Clear? Next property is consciousness. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment and respond to this environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. तो ये stimulus यानी ये signal जो है external signal, वो या तो physical हो सकता है, it can be chemical or it can be biological. ज्यादा धूप आ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिजिकल, we sweat it out, right? Chemical changes, there is some if we eat something which is bitter or sour, our body produces some kind of saliva and we throw it out or we puke it out, right? That is a chemical. Biological thing, if there is a pathogen attacking my body, I will react, my cells will make antibodies against it. That is a biological response. We sense our environment through our sense organs. Plant responds to external factors like light, water, temperature, other organism, pollutants, etc. All living organisms, from prokaryotes to the most complex eukaryotes, can sense and respond to the environmental cues. Photoperiod affects the reproduction in seasonal breeders.
both plant and animals. तो photo period जैसे मैंने कहा minimum amount of light for the plant to grow. It affects कि कौन से सीजन में मेटिंग करना है, कौन से सीजन में मेटिंग नहीं करना है. Okay. All organisms handle chemicals entering their body. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself. That is, it has self-consciousness. Therefore, consciousness becomes a defining property. तो तीनों चीजें आई ना, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस के दो तीन नाम है. पहला नाम है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई और सेंसिटिविटी. ओके, विल end this session here. Please join from the same link and we'll continue the next topic further. Hello, Ria, Vansh, Varsha, Soumya, can you hear me? Can everyone hear Yes. me? Yes, sir. Okay, we'll continue. Okay, next topic is about biodiversity, nomenclature and identification. Today, we'll do biodiversity and then we'll end the session here. Okay. Now, I would want everybody's responses. So please, अगर मैं आपका नाम लूँ तो microphone on करके answer करना. What is biodiversity? Yes. Soumya, will you tell me what is biodiversity? It's like a different set of organisms, like, you know, Okay, very good. biodiversity. Yes, bio means life, diversity and differences. Okay. Can you just give me one more alternative for the term diversity? Imagine you are explaining diversity to somebody who does not know anything. एक लेमैन को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसको आप डाइवर्सिटी का मतलब कैसे समझाओगे? What will be more appropriate? Variety. Variety. Okay, very good, Varsha. Variety is the word I was looking for. Diversity is nothing but variety. क्या क्या variety, क्या क्या available है हमारे पास, है ना? We go to shop somewhere. Okay, there was a time when we used to go for shopping. Okay, now we do window shopping or online window shopping. Okay, so we see too much of variety, right? ये कलर कौन सा है, देन वही प्रोडक्ट को दूसरे ऐप में चिपका के हम देखते हैं वहां पर कितना प्राइस है, वहां पर कितने डेज में आ रहा है. ओके, सो वी वांट सो मच ऑफ वैरायटी, राइट? शॉपिंग एप्स का हमारे पास कितना सारा वैरायटी आ चुका है. ओके, सो राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शॉपिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी ऑन अर्थ. क्या है डाइवर्सिटी ऑन अर्थ पे? लिविंग वर्ल्ड कितना बड़ा है, क्या वैरायटी है, विल जस्ट सी इन अ मोमेंट. द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ इज बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली. Let's see the number. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million according to IUCN. IUCN is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Very, very important. 3 years earlier एक question आया था, what is the full form of IUCN? या IUCN stands for dash. 4 ऑप्शन थे. मैक्सिमम बच्चों ने लिखा था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. याद रखो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. इट इज नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, IUCN के अकॉर्डिंग द नंबर इज 1.7 टू 1.8 मिलियन. ओके, डेफिनेटली दिस नंबर इज क्वाइट लेस. ठीक है, सिर्फ 17-18 लाख थोड़ी स्पीशीज है अर्थ पे. 17-18 लाख स्पीशीज इज वेरी स्मॉल, राइट? ओके, व्हेन आई से अ स्पीशीज, सो इफ आई से कैट तो सारे कैट्स आ गए उसमें. इफ आई से डॉग, सारे वैरायटी के डॉग आ गए, सारे ब्रीड के डॉग आ गए. ओके, स्पीशीज इज बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में मेट कर सकते हैं. तो हर डॉग दूसरे कोई भी वैरायटी के डॉग के साथ मेट कर सकता है, यानी डॉग एक स्पीशीज हो गया. तो ऐसे 18 लाख स्पीशीज जितने हैं अकॉर्डिंग टू IUCN. डेफिनेटली दिस नंबर इज लेस. see the beauty of biology for you guys. The same data is given in the last chapter of 12th. तो फर्स्ट चैप्टर में भी सेम डेटा दिया है, 12th के लास्ट चैप्टर में भी आपको सेम डेटा दिया है. उसमें ऑल्दो 1.7 1.8 के अलावा और बहुत सारा डेटा दिया हुआ है. This refers to the biodiversity or the number of type of organism present on earth. Okay, let's correlate this with my favorite example. That is
लोकल स्वीट शॉप. ओके, इमेजिन करो आप क्लासेस जा रहे हो या स्कूल से आ रहे हो. ओके, आपको आपकी मॉम का कॉल आता है. योर मॉम सेज कि चलो घर पे गेस्ट आ चुके हैं, आते टाइम स्वीट लेकर आना, और आपकी मॉम ने कॉल कट कर दिया. एज यूजुअल मॉम का इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है, मॉम पूरी तरह से नहीं बताती है. ओके, इट इज अप टू यू, कौन आया है, कितने लोग हैं, क्या लाना है, कुछ भी नहीं. आपको बस बोला गया है स्वीट लेके आना है. ओके, नाउ यू कॉल हर बैक कि अरे कौन आया वो तो बताओ. तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे चाचा आए हैं और उनके 2 फ्रेंड आए हैं. तो आपको पता चला कि चाचा है, उनके 2 फ्रेंड है, यानी 3 लोग आए हैं और उनके लिए स्वीट लाना है. तो अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा क्या स्वीट लेके जाना है आपको. द फर्स्ट थिंग यू विल डू, नॉर्मल शॉप पे जाओ. ठीक है, आई डोंट वांट कि आप मीरा रोड या कोई भी जगह की बड़ी शॉप में जा रहे हो. आप एक नॉर्मल शॉप पकड़ो जो आपके घर के आसपास हो, जहां पर वही समोसा वड़ा पाव भी मिल रहा है और वो स्वीट भी बेच रहा है. ठीक है, वैसे स्वीट शॉप पे गए, आपने बोला. ठीक है, इमेजिन वंश को कॉल आया है, दिस इज वंश. ओके, सो राइट नाउ आई एम वंश, एंड वंश गया शॉप में और वंश ने बोला कि अरे हाँ अंकल मिठाई देना. सीधी सी बात है, अंकल पूछेंगे भैया कौन सा मिठाई चाहिए. ये तो वंश को पता ही नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा तो मिला ही नहीं है मम्मी से. मम्मी से पता चला है कि चाचा और 2 फ्रेंड्स आए हैं. ठीक है, तो वंश ने स्मार्ट होकर पूछा कि ठीक है भैया आप बताओ आपके पास कौन सी मिठाई है, यू टेल मी क्या स्वीट्स है तुम्हारे पास. ठीक है, तो वो दुकान वाले ने कहा मेरे पास चॉकलेट्स है, बिकॉज चॉकलेट्स भी स्वीट है. ठीक है, फिर वो हल्दीराम के जो पैक्ड स्वीट्स आते हैं, ठीक है, हम सबका नॉन फेवरेट सोन पापड़ी. ठीक है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रस मलाई, वो सब है. फिर जो उसके पास खुद के शेल्फ में स्वीट्स है वो है बर्फी है, लड्डू है, पेड़ा है. ठीक है, ऑल दिस स्वीट्स आर प्रेजेंट देयर. देन उसने सोचा कि अंकल है, ठीक है, चाचा है, उनके फ्रेंड है, डेफिनेटली चॉकलेट में तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो उनके लिए नॉर्मल स्वीट्स लेके जाते हैं. सिंपल से पॉइंट है, अगर वो पैक स्वीट लेके जाएगा उसको थोड़ा मास में लेके जाना पड़ेगा, नंबर थोड़ा ज्यादा होगा. ओके, 1 kg या ½ kg का पैक लेके जाना पड़ेगा उसको, एंड देर आर ओनली 3 पीपल. अंकल को पूछा कि कौन सा स्वीट है, अंकल ने बोला ठीक है चलो लड्डू है, लड्डू में भी हमारे पास 4-5 फ्लेवर है. मोतीचूर का लड्डू, बेसन का लड्डू, कड़वा लड्डू, चॉकलेट लड्डू, ठीक है, केसर लड्डू. हलवे में भी अलग अलग टाइप है, बर्फी में भी अलग अलग टाइप है. मतलब इन जनरल सिर्फ उसके पास जो इन जनरल उसके खुद के शॉप का स्वीट है उसमें 4 मेजर कैटेगरीज है, और हर कैटेगरी में देर आर 5 to 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स अवेलेबल. ओके, देन मिस्टर वंश नाउ ही विल थिंक अभी क्या लेके जाऊं, बिकॉज आई हैव टू मच ऑफ वैरायटी, आई एम टू मच कंफ्यूज. पैक्ड स्वीट को उसने एलिमिनेट कर दिया कि चलो हल्दीराम वगैरह का नहीं लेके जाना है, वो काफी कॉमन है. ठीक है, चॉकलेट्स नहीं लेके जाना है, इसी में से कुछ लेते. फाइनली उसने डिसाइड किया कि लड्डू लेके जाते हैं. ठीक है, और वो लड्डू लेके पहुंचा. ये एग्जाम्पल में हमने ये समझा कि सिर्फ एक स्वीट शॉप में, जो नॉर्मल स्वीट शॉप है, दैट इज नॉट इवन द बिगेस्ट स्वीट शॉप ऑफ योर सिटी और ऑफ योर टाउन, बट वो एक नॉर्मल स्वीट शॉप में अगर मेरे पास मोर देन 50 to 80 वैरायटी ऑफ स्वीट है. ओके, और ये बहुत कम नंबर बोल रहा हूं मैं, 50 to 80 वैरायटी ऑफ द स्वीट्स जो उसके पास है, उसके खुद के स्वीट. हल्दीराम के पैकेट्स या वो चॉकलेट्स को तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा हूं, अगर वो भी ऐड कर दोगे तो नंबर 200 से ज्यादा हो जाएगा. सिर्फ 200 स्वीट सिर्फ एक शॉप में हो सकती है. इमेजिन करो अगर मैं लिविंग थिंग बोलूं तो अर्थ पे कितना सारे लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट द नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट. कितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, राइट? नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी दैट अर्थ होल्ड्स. ओके, ओशन को तो हमने रिसर्च किया ही नहीं है. इट इज बिलीव दैट ओशन को हमने सिर्फ 20% रिसर्च किया है. सो वॉट एवर डेटा, वॉट एवर एनिमल्स एंड प्लांट्स वी नो फ्रॉम ओशन, they are just the 20% of ocean organisms that we know. और microbes तो हम गिनते ही नहीं है. We don't calculate microorganisms here, because अगर मैं बैक्टीरिया को ऐड करते जाऊंगा the number will be huge and it will be out of my range. तो हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग्स में यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, फंगस को गिन रहे हैं, उसमें ही 1.8 मिलियन हो गया. और ये बहुत ही कम नंबर है, इससे बहुत ज्यादा होगा. वो नंबर क्या है we still don't know. Clear? Is this clear? Yes, sir. Yes. Okay, so I think so will the exact number is still uncertain and unknown. So I think so this is where we'll stop today.
Okay. Next class, whenever we'll have this chapter, we'll continue with biodiversity and classification. Okay. Make sure whatever is done today, just read it once. Okay. It is just 3 or 4 pages. I would want you guys to read it, and then when we come for the next lecture, initially I'll ask you certain questions and then we can continue forward. Cool. Yes. Chalo, bye. I hope you enjoyed this lecture. Bye, sir. Chalo, bye bye.